Good morning, students. Welcome back to plus 2 second year English. The name of the prose is The Portrait of a Lady, written by Khushmant Singh. We have already gone through some of its paragraphs in our previous classes. Today we shall read Unit 3 warm up. Life in the village is quite different from city life. There is a hell and heaven difference in the living style of village folk and city people. Right? Quite contrary. Their living style is totally contrary, quite contrary. Family relationship, परिवार संपर्क बंधन, family relationship also changes. Identities are modified. If anyone goes to a town from a village, the family relationship is changes. Or the family relationship changes. Identities are modified, बदली जाए. निजर परिचय भी बदली जाए. There is a turning point in the relationships. ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥାଏ ବା ଏକ ମୋଡ଼ ବି ଆସିଯାଇଥାଏ. Read the following unit of the text and note how a turning point occurs takes place घटे in the writer's relationship with his grandmother. That means from the introduction we came to know that the writer and the grandmother has or had shifted to the city. Now let's read whether it is true or not. Yes, this text. When my parents were comfortably settled, मोर बापा माँ जेतला आराम रे ठाब होगले इन द सिटी नगरी रे सहर रे दे सेंड फॉर आज आम सेंड फॉर मीन्स डके पठाइले से माने आमको डके पठाइले. हु वेर कंफर्टेबली सेटल्ड. द राइटर्स पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड वेयर इन द सिटी. दे मीन्स हु. द पेरेंट्स. सेंड फॉर हुम. सेंड फॉर द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर. That was a turning point in our friendship. आम बंधुत्व मध्य गोटे मोड़. Although we shared the same room, जदिओ आम एका रूम रो भागीदारी थिलु, my grandmother no longer came to school with me. That means आउ बुढ़ी माँ गाँर भलिया ता संगे स्कूल जाऊ नथुले. I used to go to an English school, गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल को मुझे जाऊली इन ए मोटर बस. जेहेतु मुझे बस रे जाऊली, ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. देर वर नो डॉग्स. से कुकुर नथिले इन द स्ट्रीट्स. और रास्ता रे कुकुर नथिले. एंड से टुक टू फीडिंग स्पेरोस. एणु से घर चढ़िया मानक खुआइबा अवसर हैबिट नहीं आइतले. तो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस रो स्पारो बा घर चढ़िया मानक फीडिंग करवा बा खुआइबा दायित्व नहीं गले. एज ए हैबिट एक रुचि भली. एज द इयर्स रोल्ड बाय. दिन जमिति दिन गढ़ी चलला
वी सा लेस ऑफ ईच अदर आमे परस्पर को कम देखा देखी हेलु हु द राइटर एंड द ग्रैंडमदर had less chance to meet each other. For some time she continued to make me up and get me ready for school. किछि दिन पाई से आग भड़िया मते उठेइबा एवं विद्यालय पाई प्रस्तुत करिबा जारी रखिले. When I came back मु जेतबे विद्यालय फेरुतिली she would ask me what the teacher had taught me. मु जेमिति विद्यालय फेरुतिली मो grandma asked me what I was taught or what my teacher taught me in the school that day. से दिन मते कौन आम शिक्षक मते कौन पढ़ाई थिले से विषय पचारुथिले. Who asked? The grandma mother asked. I would tell her English word मु तांको इंग्लिश वर्ड कहूली एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस आमर वेस्टर्न साइंस विज्ञान उपर कहूली एंड पश्चिमांचल विज्ञान विषय कहूली एंड लर्निंग पश्चिमांचल लर्निंग विषय कहूली दे विदेशी विज्ञान विदेशी शिक्षा विषय कहूली दि लॉ ऑफ ग्रेविटी आमर माध्याकर्षण बल माध्याकर्षण बल विषय कहूली आर्किमिडीज सूत्र विषय कहूली दि वर्ल्ड बीइंग राउंड आउ पृथ्वीटा गोल बोली इत्यादि इत्यादि कहूली. व्हेन शी आस्क्ड व्हाट माय टीचर टॉट मी इन द स्कूल दैट डे दिस मेड हेयर अनहैप्पी. एइटारे से ताको भारी दुख लागुतला. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माय लेसन्स. से मते मोर पाठ पढ़ार जमा साहाय्य करि पार नतुला. राइट नाउ लेट्स मूव. यस she did not believe in the things they taught at the English school. इंग्लिश स्कूल जो विषय गुड़ा पढ़ा जाऊला से विषय तांगर विश्वास नतला एंड वाज डिस्ट्रेस्ड भारी दुखित होते दैट मन खराब करते. देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड. भगवान के विषय पढ़ाऊनी एट द स्कूल बोली से भारी दुख प्रकाश करते. एंड द स्क्रिप्चर्स आउ का विषय ना शास्त्र भगवान विषय इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाऊनी बोली सी वाज वेरी मच डिस्ट्रेस्ड. वन डे आई अनाउंस्ड दैट मु दिने घोषणा कले वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. मु दिने आसी कहली जे आमको इंग्रेजी संगीत शिक्षा दि जाउछि. सी वाज वेरी डिस्टर्बड एज सी हियर्ड जेमिति ए कथा सुनिदेले my grandmother who was bad who was said about the teaching procedure and the teaching subjects of English medium school was disturbed विचलित हो गले to learn that her grandson was given music lesson. To her music had a lewd association, vulgar association, fakad अश्लील associate सहयोग. It was the monopoly of harlots. Here harlots means बेश्या and beggars एवं भिकारी बेश्या मानकर ये होची एकाधिकार. So and not meant for gentle folk. आउ से संगीत शास्त्र भद्र व्यक्ति भद्र लोक मानक पाई नुह बोली grandmother believed it. She said nothing किछि कहलानी but a silent meant disapproval किंतु से किछि कहलानी किंतु तांकर नीरवता ही जो नीरवता ही होची disapproval असम्मति. She rarely talked to me after that. ता पर से काँ बा क्वचित मो सहित कथबार्ता होतिले. When I went up to university, I was given a room of my own. मुझे तला यूनिवर्सिटी गली मत गोटे मोर निजर बोली गोटे कोठरी दिगला. The common link of friendship was snapped. आमर ये साधारण संपर्कर क्षीय छिड़ीगला. My grandmother accepted her seclusion. तांगा निर्जनता को सी बाध्य ग्रहण कले विथ रेजिग्नेशन. बाध्य मन खराब करी ग्रहण करनेले.
सी रियली लेफ्ट हेयर स्पिनिंग ए व्हील तांकर से अरट बा सूता कटा कल कम समय रे छाड़ी बसंती ता माने सी वाज ऑलवेज विथ हेयर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन दैट मीन्स का सहित कथा हवा पाई मध्य से स्पिनिंग मानु बहुत कम समय छाड़ी रहउथुले फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सकाळु जे संध्या पर्यंत सी सेट बाय हेयर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइडिंग प्रेयर सकाळु जे संध्या पर्यंत तांकर से अरट पाखरे बसी गुणगुण होई प्रार्थना बोलुतांती सूता काटुतांती ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल टू फीड दिस पारोस केवल अपराह्न समय रे निज को टिके आराम दियंती फ्री करते आउ फ्री करती कौन ना चढ़ई मान को खुआइबा व्हाइल सी सेट इन दी वेरेंडा पिंडा पर बसंती ब्रेकिंग दी ब्रेड रुटी खंड खंड करते इंटू लिटिल बिट्स छोट छोट खंड करती हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हेयर राउंड से खंड खंड करी बसंती खंड खंड करती शह शह पक्षी तांको घेरी जाती क्रिएटिंग ए वेर्टिबल बेडलम ऑफ चर्पिंग घेरी जाती एवं कोलाहलमय दृश्य गोटे सृष्टि करती सेमानकर कलरवरे सेमानकर ची ची शब्दरे सेमानकर रडीरे एक कोलाहलमय दृश्य सृष्टि करती सम केम एंड perched on her legs केते आसंती पेचड मिंदी बसंती ऑन हेयर लेग्स तांको गोड़ उपर बसंती अदर्स ऑन हेयर शोल्डर तांक खांद उपर अन्य माने तांको खांद उपर बसंती सम इवेन सेट ऑन हेयर हेड आउ केते जन एमिति कि तांको मुंड उपर बसंती कुड अंडरस्टैंड हु दी स्पारोस राइट सी स्माइल्ड से मुरिक हसा देउथिले बट नेवर शुड हियर शुड मीन्स सु सु करी आमे जेमिति कि कुकुर को कि अन्य पशु पक्षी मान घौड़ू थाऊ ये शब्द सृष्टि करी से बड़ी से केबेल सु सु करी तांको घोड़ेबेनी देम एवे इट घोड़े नहीं इट यूज्ड टू बी दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हेयर आउ से समय तक तांको पाई सबुठारु सुखदायक समय दिनर सुखदायक समय थिला ओके नाउ लेट्स हियर ग्रोसरी लिविड मीन्स भलगर फकड़ अश्लील बेडलम एक कोलाहलमय पूर्ण दृश्य ए सीन फुल ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन काओस a veritable bedlam of chirpings, a genuine scene of noise or confusion caused by the chirping, kichiri michiri shabda of the sparrows, which scattered जन विक्षिप्त ही थांदी and patched बसी थांदी around the author's grandmother. Right now let's move think it out or we can say comprehension questions. The first question is why didn't the grandmother accompany the writer to school in the city? The writer went to school by bus, so the grandmother did not accompany him to school. Next, why couldn't the grandmother help the writer with his lessons at the city school? The writer was reading Western science, law of gravity, Archimedes' principle, the world being round. Grandmother did not know it, so he could not help him in his lesson. So she could not help him in his lesson. Next question is, that is question number 3. Why did the lessons at this English school distress the grandmother? Grandmother was an old-fashioned lady, Punakalia Mahila, to her reading scriptures. Scriptures, you know, Dharma Shastra. To her reading scriptures was really education.
praying God and reading scriptures were real education to her, to grandmother. As the English school taught Western science instead of in the scriptures and God and prayer songs, she thought it was she thought it distressing. Okay, next question is what were no. Question number 4. What was she disturbed about music lessons at the English school? Grandmother to grandmother. Music had lived association with lived association. Just 1 minute. Let's see. Okay. To her, music had a lived association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. So, the grandmother was disturbed when she heard that the school taught his grandson music lessons. Okay, now let's move to the question number that is yes 5. What were the 3 ways in which the grandmother spent her days when the author went to university? When the author went to university, the grandmother was lonely. She spent time sitting by spinning wheels, reciting prayers, and feeding the sparrows. So, these were the 3 ways in which the grandmother spent her days when the author went to university. Okay, now let's move the next question. Yes, what is the question number? Yes, number just 6. What was the happiest time of the day for her? In the afternoon, grandmother fed the hundreds of sparrows that gathered around her demanding bread. While feeding them, she felt that the time was the happiest time of the day for her. Next, how did she accept her seclusion? When the relationship from the writer was cut off, snapped, you remember the word snapped, Chindigala. Grandmother did not complain, rather accepted it with resignation. And that is the end of today's lesson. We shall discuss the other paragraphs in our next class. Till then, bye. Thank you.